Good afternoon, everyone. Namaskar. Welcome to this weekly market analysis. हम हर हफ्ते फ्राइडे के दिन शाम को 2:30 से 3:30 बजे मार्केट की क्लोजिंग आवर पे मिलते हैं, जहां पर हम पिछले एक हफ्ते में उतार चढ़ाव जो हुआ है, मार्केट का रुझान क्या हुआ है, टॉप सेक्टर्स किस तरह से परफॉर्म किए हैं, ब्रॉड इंडाइसेस ने क्या किया है, ये सब जानकारी हासिल करने के लिए आते हैं। एंड अगर हमारे बीच में जो भी वीकली या जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने वीकली ट्रेड सेटअप्स समझ सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि कॉन्ट्रा बेट्स या वैल्यू पिक्स कहाँ से करें एंड मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग पिक्स कहाँ से करें। हम लोग यहाँ पर क्या नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं, कोई भी स्टॉक टिप्स या ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं शेयर करते हैं। we discuss the general support and resistances of the broad indices, of the sectoral and thematic indices, and हम लोग एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का रुझान क्या है, ताकि हम सब टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, डेरिवेटिव डेटा के द्वारा अपनी ट्रेडिंग को सुधार सके। तो आइए चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले सेबी के निर्धारित कुछ डिस्क्लेमर्स, ताकि हम सब सेम लाइन पर रहें, सेम सिंक पर रहें कि हम लोग इस सेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। मेरा नाम अमित गोयल है, मैं एक सीएमटी चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ये मेरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं। स्टैंडर्ड वार्निंग्स एंड डिस्क्लेमर्स एज पर सेबी एंड एनालिस्ट डिस्क्लोजर। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सबसे पहले, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है, सॉरी वीकली क्लोजअप है, वीकली राउंड अप है, तो हम लोग डेली चार्ट के अलावा ब्रॉडली स्पीकिंग वीकली चार्ट्स पे भी थोड़ा सा नजर रखेंगे। ऑलराइट, तो अगर आप वीकली चार्ट देखें तो आपको क्या दिख रहा है? मार्केट काफी वीक है। मार्केट ये हफ्ते 2.33% के साथ एक नेगेटिव क्लोज देता दिख रहा है। नॉट ओनली दैट, मार्केट ने एक नया लो भी दर्शाया है, विच इज हियर। करेक्ट, तो मार्केट ने जो है एक नया लो बनाया है एंड 2.34% नेगेटिव के साथ मार्केट वीकली क्लोज दे रहा है। सो what is the inference here? That the markets are weak. Now, अगर मार्केट वीक है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? What kind of trades that we can do? The trade that we can do, first one is sell into weakness, or if oversold, look for contra or counter trend opportunities. So these are the two things that we as traders should do. हम लोग क्या करेंगे? अगर वीकनेस बरकरार लगती है, अगर हमको लगता है कि हाँ ये वीकनेस अच्छी खासी है, तो हम लोग वी विल ट्राई टू सेल इनटू दिस वीकनेस। दैट्स नंबर वन। सेकेंड, अगर हमको लगता है कि नहीं, मार्केट्स आर ओवरसोल्ड and there are some technical reasons that we could have a bounce, we try and adapt a contra trade or a counter trend trade system. ओके, तो उनके रूल्स क्या हो सकते हैं, उनके चेकलिस्ट क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले वीकनेस की बात करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोगों ने वीकली कैंडल देखा
तो वीकली कैंडल में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आपको ये नजर आ रहा है कि वी आर क्लोजिंग एट द लो ऑफ द वीक, और डू वी सी दैट इट इज अ डोजी कैंडल with buying and selling from both ends, right? So what kind of a candle is this? This is a long legged doji, correct? This is a long legged doji candle. Along with that, there is some selling pressure and there is some buying support. मार्केट जहां खुला था वहीं पर जाके बंद होता दिख रहा है. ओपन एंड क्लोज आर similar. So this is a long legged doji in decision candle. Are we clear with this? So this is an indecision candle. There is selling at the top, which is 25,000, and there is buying at the bottom, which is 24,200. All right. So we have made a low of about 24,200, 300 के आसपास, and 25,000 के आसपास हम लोगों ने resistance खाया है. ठीक है. So this is an indecision candle. Because it is an indecision candle, we do not have clarity whether this will continue. The clear-cut sell opportunity arises. The clear-cut sell opportunity arises. Sell below or at break of this level. Correct? And if you are looking to buy, you will look to buy into strength here. Correct? So, Om Prakash sir, but it is also appeared at support of 24,300. Correct. So 24,300 पे support, that is the second point that I was trying to make. So what we will, as a trader, what we will like to do is we will want to buy into the strength if the market, reverses from here, and we will want to sell if the market breaks this level. Why is this level crucial? Let me just, let me just make this point clear to all of you कि ये पॉइंट नीचे वाला जो है वो क्रूशियल क्यों है. चलिए थोड़ा कुछ यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं. ठीक है. अब अगर मैंने यहाँ पर सब ये मार्किंग कर दी, इसको एक बार हटा देते हैं. ऑल राइट. अब अगर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी, यू विल ऑल नोटिस 24,300 का जो है ये मल्टीपल वीक का सपोर्ट है. तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सीधा 300-400 पॉइंट 24,000 के आसपास आ सकता है मार्केट. सो इफ यू आर फीलिंग कि भाई मार्केट वीक है, राइट, अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करता है, लेट्स से इन द कमिंग वीक मार्केट ट्रेड्स इन दिस रेंज, ओके, कीपिंग दिस as your stop loss, you can consider credit spreads. What sort of credit spreads? Bearish credit spreads. Correct? So this can be called as an invalidation level. Invalidation level. Correct? If the market bases, right? Bases, yeah, if it breaks the low. Correct? तो ये एक आपका अपॉर्चुनिटी हो सकता है फ्रॉम अ वीकली स्प्रेड और अ वीकली और इंट्राडे स्प्रेड्स, जो भी आप 25,000 का यहाँ पर आप बना सकते हैं. एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है. नाउ इफ द मार्केट continues to trade above this level in this area, right, this becomes your invalidation level. And because the IV, अगर आप नोटिस करें, IV is elevated, hence bull
credit spreads. Okay, so if the market bases here above this level, right, तो ये हमारे दो opportunities हो सकते हैं if there is going to be some indecision, because this is an indecision candle. If we were to assume कि by next week जो है sideways type का एक range bound हो सकता है market within 25 as the upper bound and 24 as the lower bound, और 24,300 और 200 as a lower bound, तो हम लोग इस तरह का एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं. Okay, the third trade setup is if the market ranges between these two levels, or let me put it a little more broadly. If you feel that the market is likely to range between these two levels, consider a short condor. Okay, ये रेंज का आप शॉर्ट ट्रायंगल और एन आयन कॉन्डोर भी कंसिडर कर सकते हैं. I would suggest short triangle from an intraday perspective and iron condor for overnight, because I do not want anyone to keep unhedged positions overnight, क्योंकि मार्केट बहुत बहुत शार्प है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दे रहा है ऑन अकाउंट ऑफ द जियोपॉलिटिकल न्यूज फ्लो, एंड एनीथिंग कैन हैपन ऑन अ मंडे और अ ट्यूसडे. ठीक है ना. हम लोगों ने कल क्या देखा, कल 2:30 को एक न्यूज आई जिसके कारण मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया, एंड सेंसेक्स का जो सेंसेक्स में जहां तक मैंने सुना है, सेंसेक्स 80,000 कॉल which was trading at 3 rupees jumped to 311 rupees within few minutes. Yesterday's expiry. Okay, so it is very very dangerous. तो आप अनहेज्ड पोजीशंस तो ना ही करिएगा. आप अगर कोई भी पोजीशन रखते हैं, you will have to keep it hedged. Okay, so spreads is the best way to go about it. So this is what is the developing scenario. Let me see some of the questions. Sir, OI का डेटा कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों नहीं बता देते आप, क्योंकि इसके बाद क्लियर कट आइडिया आ जाता है. रवि तवाटे, ओआई डेटा इंट्राडे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, एंड अगर मैं उसको अपने ओवरनाइट पोजीशंस के लिए यूज करने की कोशिश करूं, तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल कई बार नहीं होता है. तो लेट मी जस्ट ट्राई and show you the OI data as well. My system seems to have stuck. Just a second, my system is stuck a little. थोड़ा सा सिस्टम के प्रेशर को लाइट कर देते हैं. बहुत सारे जो खुले हुए हैं विंडोज, उनको बंद कर दें.
ऑल राइट। नयन खत्री, कॉल लेना है या पुट आपका डिसीजन होगा सर। हम लोग जैसे पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द ओआई डेटा। ओआई में क्या दिख रहा है? टोटल कॉल्स 1740, टोटल पुट करीब करीब 1400। तो जैसे मैंने बताया पहले भी, कॉल्स हमेशा इंडेक्सेस में थोड़ा यू विल ऑलवेज फाइंड अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑन अकाउंट ऑफ सम ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट लॉट ऑफ दिस प्रोफेशनल्स यूज, विच आर नोन एज कवर्ड कॉल्स। ठीक है, तो वहां पर आप कॉल्स को अगर हटा देंगे, थोड़ा सा उसको डिस्काउंट कर देंगे, तो आप मोटा मोटी देखेंगे कि द पीसीआर इज बैलेंस्ड। ठीक है, पीसीआर जो 0.8 है इज मोर और लेस बैलेंस्ड। इट इज न्यूट्रल टेरिटरी इन माय ओपिनियन। ऑलराइट, यहाँ पर हम पूरा का पूरा ऑप्शन चेन नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि 25,000 सबसे ज्यादा हमारे पास कॉल ऑप्शन है, और पुट ऑप्शन इस तरफ नहीं दिख रहा है। सो दिस इज अ लिटिल यू नो डिफिकल्ट टू रीड, बट अगर मैं एक और जगह आपको दिखाऊं, जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, कि भाई वेयर कैन इट बी। आई जस्ट शो यू द ऑप्शन चेन हियर एज वेल, ओपन इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है, यू कैन शो फॉर ऑल इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट। I show for all, can you see 22,750 पे सबसे ज्यादा। now you will be able to understand कि भाई जो ऑप्शन चेन है वो 24,000 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। 24,600 पे इक्वल स्ट्राइक्स हैं, एंड 25,000 पे कॉल्स हैं। तो 24,000 एंड 25,000 का जो एक रेंज है, मोटा मोटी एक रेंज दिख रहा है फॉर द मार्केट्स। ऑलराइट, so this is a broader range which is unfortunately not available on our system on account of static views of the OI. ओके, तो आपको ओआई समझ में आ गया कि भाई दोनों तरफ से बराबर है। सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड ओआई। प्राइजेस आर इनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड। हम गया हमारा ऑप्शन। It seems to be some problem with my system. Let me try and see if I can do something about it. Okay, चलो चालू हो गया। All right, we see that after nearly 3 o'clock, where the market is giving up a lot of its, intraday gains, and the market is trying to close at the low point of the day. So this is a little concerning. Market में weakness बनती दिख रही है। ठीक है, सो वी हैव अभी किसी ने पूछा था, नयन खत्री साहब ने पूछा था, बट अभी कौन सा लेवल ब्रेकआउट करेगा सर? हम लोगों ने दो लेवल मार्क किया है, 24,337, ये जो कांस्टेंट लेवल है। पिछले अगस्त 2025 से ये लेवल टूटा नहीं है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो अगर यहाँ 24,300 लेवल्स टूटता है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इन माय ओपिनियन विल कम क्लोजर टू 24,000 लेवल्स। ये भी अगर टूटता है तो सीधा 23,200 जाएगा, राइट? तो इफ दिस लेवल ब्रेक्स, देन द नेक्स्ट जर्नी इज 24, उसके बाद सीधे 23,200 के आसपास आ सकता है। दिस इज द असेसमेंट। आर वी क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि भाई हाउ डू यू सेल इनटू वीकनेस और बाय इनटू स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां पर एक वीकनेस वाला हम लोगों ने वीकनेस, स्ट्रेंथ एज वेल एज न्यूट्रलिटी, तीनों चीज देखी। एक मैं आपको अब हाउ डू यू बाय इनटू स्ट्रेंथ ऑन द वीकली कैंडल, ये मैं आपको निफ्टी डिफेंस का चार्ट दिखा के बताने की कोशिश करता हूं। ओके, ना निफ्टी डिफेंस जो है, it has been in this range for some time now.
Okay, what is the pattern that Nifty Defense is making? What is this pattern that Nifty Defense is making? The pattern that Nifty Defense is making is called a W pattern, which essentially is a consolidation breakout pattern. Okay, so what we are looking at in Nifty Defense is we are building into the strength, and it is showing a clear breakout of this entire consolidation range. And हम लोगों ने कई सारे टेक्निकल सेशंस में ये बात किया है. ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है? विच इज दिस कैंडल? क्या हमको ये कैंडल का नाम याद है? बुलिश मोरुबोजू, मारुबोजू या मोरुबोजू, क्या बोलते हैं इसको? मारुबोजू, करेक्ट, मारुबोजू. मारुबोजू bullish candle. Open is equal to low, close is equal to high. Nearly we are at the high point of the candle, right? So what are the two things that are aligning with this? W pattern, consolidation pattern है in Nifty Defense, and एक very strong candlestick pattern के साथ market close करता हुआ दिख रहा है, correct? So this is called buying into strength. Now, how will you buy into strength? What is the weekly range for this candle? The weekly range for this candle is 5%. Right? Now, अगर आप single stock में leveraged buying करेंगे, 5% एक एक सिंगल स्टॉक में डिफिकल्ट होगा. मगर अगर मैंने सेक्टर का आइडेंटिफिकेशन किया या थीम का आइडेंटिफाई किया कि उस सेक्टर या थीम में इस तरह का एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, हाउ विल आई ट्रेड इट? कैन आई कंसिडर ट्रेडिंग इट वाया और इन्वेस्टिंग इट वाया ETFs or index funds? Okay, again, no recommendations or anything, but if you want to go long into an index, into a theme, you can consider finding out which are those indices, which are those ETFs or passive index funds which are available for a particular theme or sector. अब आपका next question होगा, where can I find a list of these type of tradable instruments of a particular sector or index? So let's do one thing. Let's quickly go to a website known as niftyindices.com. Can you all see this? niftyindices.com. This is a website maintained by NSE, National Stock Exchange, which essentially gives you the data of all the indices that NSE produces and maintains. So what we are looking at is a thematic index called Nifty Defense. Can you all see? In the thematic indices, so you will get all the indices, broad-based, sectoral, thematics. So if you can notice, सबसे पहले जमाने में, मतलब back in the good old days, sector funds or sectors were very popular. But now we have evolved into thematic baskets. So it can be capital markets, which will include stock exchanges, your RTA agents, your wealth management companies, so on and so forth. So it is a theme around which we are playing. It could be, public sector enterprises. Can you all see this? India Defense. Now, in the India Defense Index, it will give you a lot of data. तो कई लोगों ने शायद ये पहली बार देखा होगा. You might want to bookmark it. It's a very, very important website. So India Defense, उसका
इंडेक्स का मैन्युफैक्चर, उसका थीसिस, उसका लॉजिक क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है. The Nifty India Defense Index, which aims to track the performance of portfolio of stocks that broadly represent the defense theme. From Nifty Total Market Index. Total Market Index, I have given examples many a times. So I'll just, quickly recap for all our new students, which is this. What is total market? So total market index comprises of top 750 stocks. Okay, now what's the breakup of this? Very simple. Large 100 stocks, mid cap, which is as per market capitalization, you have 150 stocks, small cap, which is 250 stocks. So this gives you Nifty 500, right? So this is NSE 500. Add micro caps of another 250. This gives you total market index. So essentially what NSE is telling, from these 750 stocks, they have their own logic, which defines a particular company. If a particular company's, highest contribution of sales and revenue comes from the defense area sector, it is, basketed into this, in this theme. Okay, so which are those companies, right? We want to probably know. So what we can do is we can quickly go down here and understand sectors: capital goods, automobile, auto components, chemicals. And if you select this industry, वो industry में भी बता देगा आपको. ठीक है? You want to understand basic industry, जो इनकी classifications हैं, it will give you basic industry as well. All right. Along with this, if you want to understand the methodology, the index constituents का Excel sheet or the fact sheet, ये fact sheet बहुत interesting होती है. You should, at least have a look at this fact sheet. This is as of February 27, 2026. Brief description of what this index comprises, what's the thought behind it, and इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, how is it constructed, when is it reconfigured and rebalanced and all that. ठीक है? Along with this, some basic statistical data, returns, standard deviation, fundamentals, the PE कितना है उसका, price to book कितना है, dividend yield कितना है, and the top constituents by weightages. Bharat Electronics 21%, Bharat Forge 17%, HAL 17%, Solar Industries 11%, Masgaon Dock 5.78%, so on and so forth. So you will come to know that this is the index which comprises of these companies. सब individual companies में हम लोग या तो व्यू लेके चार्ट का either technical analysis or fundamental analysis का सहारा लेके we can understand and take a punt there, or we can look at the sectoral or thematic indices, understand whether there is strength or weakness into it, and look to act upon it. Okay, so one example is, now the final part is how would you trade it. So या तो individual stocks में आप देखो भाई आपको position लेना है, या जैसे मैं बता रहा हूं कि if you want to take a punt on the entire index itself, so you can see ETFs listed in India. Grow Mutual Fund, Motilal. Again, no recommendations or endorsements, but I'm just reading out facts. So Grow and Motilal Oswal have listed ETFs. So ETFs का फायदा क्या है? आप shares की तरह लेना और बेचना इंट्राडे में भी कर सकते हैं. Domestic index funds, Aditya Birla Sun Life and Motilal Oswal Mutual Fund. So index funds are passive funds, low cost, low tracking error वाले index funds होते हैं, which kind of mimic or try to mirror the ups and downs of that index. ठीक है? तो आपको अगर index में punt लेना है, you can consider these two ETFs or these two passive index funds or ETFs. Are we clear with this? ठीक है? This is some background about how to identify कहां पर लेना है. Now,
So individual stocks में लेना हो, right? That particular stock may or may not have some certain idiosyncrasies which can, impact your profitability on a enhanced basis. मतलब बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट आ सकता है आपको इंडिविजुअल स्टॉक में, अगर अच्छे से आपने अच्छा चल गया तो, और बहुत जल्दी आपको स्टॉप लॉस ब्रेक कर सकते हैं अगर वो बहुत जल्दी पिट गया तो. So from a sectoral view, from a thematic view, it is little more less volatile as compared to the constituents. So one can consider, this kind of a setup. Are we clear? So we are looking at an example of a strength. It is a Morubozu candle. It is a W pattern which is giving a breakout. Plus, it is also a bullish engulf. And to top it all off, sentimentally, because of the US-Iran negativity, conflict issues, sentimentally bhi, defense as a sector, as a theme, will be in focus. अब ये बात दूसरी है कि फंडामेंटली फ्रॉम दिस पैक ऑफ BHEL, BL, HAL, सोलार इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, हम इन कंपनियों से ईरान को या यूएस को कितना हम लोग माल बेच रहे हैं इन द डिफेंस पैक, ये शायद मुझे तो पता नहीं है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो, मतलब उतना मेरे को आइडिया नहीं है उसका. तो बट सेंटिमेंटल तो दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है. ओके, इसका स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे? बहुत सिंपल है भाई, इसका स्टॉप लॉस कहां पर लगता है? अगर ये कैंडल इनवैलिडेट हो जाता है, ये जो बुलिश एनगल्फ है, ये जो मोरुबोजू कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, राइट, अगर ये इनवैलिडेट हो जाता है, एंड इफ दैट गेन इज गिवन अप, you know what your stop losses can be. Correct? So we are clear with this. I hope this is absolutely clear. All right. Now, another way of, so what we have looked at is, we have looked at sectors which are showing how to identify momentum plays wherein you can either find out strength or you can find out weakness. The other thing that we were discussing was how to find out contra bets. Okay, how to find out oversold or overbought levels. Okay, so what we will do, we will quickly make a small table here, right? Oversold slash overbought. Okay, how would I classify this? From a momentum indicator, I can classify this saying, let's look at one factor. Let's say RSI below 30 on weekly time frame and RSI above 70 on the weekly time frame. ओके, ना ओवरबॉट, अभी हमारे पास डिफेंस सेक्टर का ये कैंडल दिख रहा है कि भाई मोरुबोजू बुलिश एनगल्फ कैंडल है, तो शायद ये ओवरबॉट भी हो सकता है. लेट अस चेक इफ दिस इज द केस और नॉट. Now, what is the RSI level in defense sector? It is 63. So what does that tell us? That tells us that there might be some more steam left in this sector, because nor is it showing any divergence, nor is it showing overbought levels on the weekly time frame. So from a positional perspective, from a swing perspective, there could be some more juice left in this counter. Can we go wrong in our analysis? We could most certainly go wrong, because markets are supreme, right? I mean, लॉजिकल बात किए हैं अभी तक, बट क्या मार्केट पूरा का पूरा गिव अप मार के पूरा का पूरा टर्न हो सकता है? इट कुड मोस्ट सर्टनली हैपन, राइट? डज दैट मीन कि आवर लॉजिक वाज रॉन्ग? No, our logic is clean. It's very simple logic which we have applied, right? But so if in spite of correct logic, in spite of correct analysis of the trade,
if the trade goes and hits your stop loss, you are still following your system. You're still following your system of trade. ठीक है ना? So there's nothing wrong in it. But if you follow a system, you are eventually going to end up making money in the system. Now, डिफेंस इज नॉट ओवरबॉट. ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस सबसे पहले देख लेते हैं. पहले थीमेटिक अपने ब्रॉड इंडाइसेस देख लेते हैं. नाउ निफ्टी एट 39 is still not oversold. ठीक है, however below 40 in the 30s it will definitely enter bear territory. So 24,337 psychologically is a very crucial level for the markets to sustain, to defend. अगर वो नहीं होता है तो there could be some more pain in the broad indices. Now this is Nifty. Let's look at Nifty Junior. Again 47, mid cap 44, small cap 37. So small caps are a little weaker of all the indices. ठीक है, so there is further weakness, there is more weakness witnessed in small caps. And what about micro caps? Micro caps and small caps are the places where we have seen a lot of weakness in terms of RSI. तो यहाँ पर क्या हम डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? It remains to be seen. Is there a value buying opportunity in small and micro cap from a technical standpoint? Is something that we will have to understand. Now, let's look at the sectoral and thematic indices. Okay. Now, private banks on the weekly time frame, quickly हम लोग देख लेते हैं 70s या 30s के ऊपर या नीचे. Unfortunately, in trading view, we do not have a screener for indices. We have it for stocks. Okay, so we are just looking at it manually. So now what about PSU banks? यहाँ पर भी नहीं है. Any of the indices which are showing overbought or oversold levels? Okay, so metals at 68 is close to being overbought. So we will just make a note, metals इसका है 68. Anybody else? Okay. Very clearly, IT कितना है? 27 weekly पे. All right. We have been discussing IT for a long time, and it also figures in the overs. गलत लिख दिया ना? This is IT 27 and this is metals 68. All right. Again, IT small, mid and small IT and telecom with the same thing. IT लिख लिया है, so we will go ahead. FMCG, chemicals, internet, service, housing, tourism. Tourism, we are all aware because of the problems on account of the geopolitical tension. So tourism is a usual suspect. Mobility, India digital. This is an interesting space. Digital 23. So India digital के constituents सबसे ज्यादा weak लग रहे हैं. Okay, which are the India digital constituents? Bharti Airtel. So we can go back to our indices, Nifty indices, and find out.
So we can hardly find any which are making a new high. All right. So what have we found out? We have found only one sector which is trading above 68, which is metals. So metals में strength है. It is close to overbought, but it is still not overbought. But इसमें strength है. Clear weakness किसमें दिख रहा है? IT, tourism, and India digital. Okay. And along with this, we have also marked what? Strength or momentum is in defense. W pattern breakout. Correct. So this is what we have understood from a sectoral viewpoint. So defense में breakout दिख रहा है, metals में continuation of strength दिख रहा है at 68 levels. IT, tourism and India digital में weakness दिख रहा है, right? So what this helps us, how this helps us is we get to create a watch list of companies which are in these sectors and find out अगर हम वो स्पेसिफिक कंपनीज को ट्रेड करना चाहते हैं, वी ट्राई एंड फाइंड आउट किसके चार्ट पैटर्न्स सबसे ज्यादा अलाइंड है फ्रॉम द विथ द ब्रॉडर इंडाइसेस एंड वी ट्रेड देम. ऑलराइट, द सेकंड ऑप्शन इज एंड द मोर इजियर ऑप्शन इज simply find out their ETFs or their index funds and trade via those index or ETF funds. Are we clear? इंडिया डिजिटल कंपोनेंट्स. चलिए इंडिया डिजिटल कंपोनेंट्स क्या क्या है देख लेते हैं. हाउ डिड वी फाइंड आउट? वी वेंट टू द निफ्टी इंडाइसेस. इंडाइसेस में जाएंगे, थीम्स, इंडिया डिजिटल. So what does India Digital comprise of? India Digital Index aims to track the performance of portfolios of stock that broadly represent the digital theme. The largest 30 stocks from eligible basic industries are chosen based on 6-month market capitalization. Okay. Okay, some more details have been shared. Now, listed ETF is Tata Mutual Fund का एक ETF है, and index fund is HDFC Mutual Fund. So you have tradable options in India Digital. Now, fact sheet अगर आप जाएंगे, you will get this fact sheet. You will get the major components. Okay, this is constituents by weightage. So you will find Bharti Airtel, okay, Eternal, which is Zomato, HCL Technologies, Tata Consultancy, Infosys, Policy Bazaar, Tech Mahindra, Paytm, Swiggy, and InfoEdge, Naukri.com. So these are your top constituents, in which you will see HCL Technology has a higher weightage as compared to Tata and Infosys as well. Maybe because HCL Technology has a higher share of revenue coming from digital services as compared to TCS and Infosys. Hence, it has a higher weightage. Are we clear? So these are the companies which are, are forming a component or a constituent of India Digital. So अगर आपको लगता है कि you can create a watch list of these companies, see कौन से में reversal दिख रहा है, which are the ones which are, the top weightages हैं. So the index will move on account of, movement in the top weightages, not for the bottom weightages. One final thing. If you want to understand the entire list, go to this index constituent. इसको download कर लो. ठीक है, ये एक Excel sheet, एक CSV फाइल देता है जिसको आप नोट कर सकते हैं. एंड देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं ताकि आपका भी ट्रेडिंग बेटर हो, मतलब आपका रिसर्च बेटर हो. एज अ टेक्निकल एनालिस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कहां से आता है डेटा, सो दैट देयर इज नो ब्लैक बॉक्स कि आप अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हो. ठीक है, इन दिस यू विल गेट all the companies which are forming a part of India Digital. If you want to keep a track of all these companies, you can keep a track of all the 30 companies
which are a part of India Digital. ठीक है, so you have FL, Bharti Hexacom, Coforge, Cyient, Eternal, FSN, HCL, India Mart, IRCTC, then you have Intellect Design, KPIT, L&T, LTIM, so on and so forth. All right, so you understood from where you get these data points. Are you clear? Any doubts so far? Okay. Now, finally, अगर आप swing trader हो and you do a weekend analysis only of, let's say, stocks, sectors we have just concluded. Let us say we do a weekly analysis of stocks to find out same thing, momentum, where the momentum is there, where the momentum is strong, or you might want to find out some value buying कि भाई या तो growth देखें जहां पर momentum आ रहा है या you are trying to find out value. Okay, so these are the two factors that one can focus on. What are the two factors? Momentum and value. Okay. So, Shiva Reddy, what is exit? I did not understand. Can we hold Nifty calls? Again, I cannot handhold you, sir, unfortunately. But looking at the price action, Nifty is down by 336. It is weak. And by the looks of it, it might just break the 24,337 level, right? Given this weakness, having a bullish view, especially when the RSI is also not at oversold levels, may be a little premature. थोड़ा सा दिक्कत वाला तो सीन लग रहा है. ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं. वी हैव अंडरस्टूड इंडेक्स का. लेट अस ट्राई एंड रेप्लिकेट दिस ऑन स्टॉक्स. कि भाई अगर हम स्टॉक्स में मोमेंटम एंड वैल्यू देखना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम अ डेली पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मोर, अगर आप वीकेंड ट्रेडर हो, अगर आपको सिर्फ वीकेंड पे एनालिसिस करना है एंड कैश मार्केट में लॉन्ग ओनली करना है, ठीक है, लॉन्ग ओनली सेटअप से शॉर्टिंग नहीं करना है थ्रू डेरिवेटिव डेटा. ओके, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स वी शुड बी कीपिंग एन आई आउट ऑन? देयर आर टू थिंग्स दैट आई लुक फॉर. वन इज अ मोमेंटम प्ले जहां पर स्ट्रेंथ दिख रहा है इन सर्टेन स्टॉक्स, एंड देयर आर वैल्यू प्लेस जहां पर stocks are oversold, ठीक है, and they are also showing some sort of positive divergence. So when I am looking at a counter trend play, so value play is nothing but a counter trend trade. Okay, so I look at two things. One, RSI should be less than 30, which essentially means oversold levels. Second, I also look for positive divergence in price and RSI. We will look at a couple of examples to understand on the live charts what a positive divergence is all about. Okay, let's look at value plays. Why I am looking at value plays first? Because markets are weak. So you will find a lot of stocks which are trading well below their overbought, oversold levels. The Avenger, सर आपने पूछा शुड बी होल्ड पीई. जैसे मैंने आपको बताया, हैंड होल्डिंग हम लोग नहीं कर सकते. वी कैन नॉट, इट विल बी कंस्ट्रूड एज अ ट्रेड रिकमेंडेशन which is not under our purview in this format of our discussion, right? However, the markets continue to show weakness, so you need to take a call on that. Now हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले यहाँ पर in the trading view platform, you will have to go to the main platform and you can even have a normal free सब्सक्रिप्शन. ओके, विदाउट सब्सक्रिप्शन नॉर्मल फ्री अकाउंट भी होगा तो भी आप खोल सकते हो.
निखिल श्री रेड्डी, प्रियांशु पनवार, कई बार मैंने बोला है सर, ट्रेड रिकमेंडेशन हम लोग नहीं दे सकते। आपका कॉल या पुट का फाइनल डिसीजन आपने खुद लिया है, तो उसका एंट्री आपने अपने आप से लिया है, तो एग्जिट भी आपको अपने आप से लेना पड़ेगा। मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, कैंडल स्टिक देख के और लेवल देख के कि मार्केट्स जो है काफी वीक क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। ऑल राइट, नाउ इन दिस वीकनेस अगर आपको कुछ काउंटर ट्रेंड, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो जहां पर हमको पॉजिटिव डाइवर्जेंस और आरएसआई ओवरसोल्ड हैं, वो स्टॉक्स में सबसे पहले बाइंग आती दिखेगी। नाउ हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? मार्केट कैप मैंने क्या किया यहाँ पर, व्हाट, ओके, लेट्स गो टू दिस स्क्रीनर। स्क्रीनर में हम जाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने निफ्टी 500 कर लिया, या आई कैन इवन डू निफ्टी टोटल मार्केट। टोटल मार्केट में माइक्रो कैप्स भी आ गए, राइट? तो टॉप 750 कंपनीज का हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट कर लिया है। आर वी क्लियर? ये टॉप 750 कंपनीज का लिस्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आर एस आई लगाऊंगा। आर एस आई फॉर वीकली, हियर आई विल से बिलो 30. So there are 124 stocks out of 750 stocks जिसके वीकली आरएसआई 124 30 लेवल्स के नीचे हैं। सो दीज आर द कंपनीज विच आर ओवर सोल्ड। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम्स में आरएसआई जो है, टेक्निकल्स में जाएंगे, यहाँ पर आरएसआई दिखेगा आपको। चेंज इट टू वीकली एंड शॉर्ट असेंडिंग। तो सबसे वीकेस्ट स्टॉक कौन से हैं वो दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है? नाउ should I hold gold or not? Again, as I told, I mean, if the overall markets are weak, gold should ideally, show some relative strength. But gold has, kind of faltered to deceive. क्योंकि अगर आप देखें गोल्ड में क्या हो रहा है ऑफ लेट, it has not really, given that kind of strength. जो एक this is the weekly candle of gold. Can you see what is happening on the weekly candle of gold? It's a bearish engulf. It is a bearish engulf. AVS Kumar, shall I buy, put or call? Again, I'm saying हम लोग ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे सकते. What is my idea about Nifty opening? Closing जिस तरह से आ रहा है निफ्टी में, it looks like it can be a weak opening, ठीक है? But लास्ट वीकेंड पे वॉर छिड़ी, तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद एक गैप डाउन हुआ। इस वीक में देयर कुड बी, अगर वीकेंड पे कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द मार्केट? इट विल ओपन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप आल्सो। तो मंडे का गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। ओके, नाउ लेट्स क्विकली फिनिश दिस. So you can see that RSI is well below 30, oversold है, but सिर्फ oversold होना is not a reason for me to start buying. चेतन कुंडल, आपका हिंडाल्को चेक कर लेते हैं सर। हिंडाल्को में क्या चेक करना है आपको? What do you want me to check in Hindalco? We have already identified metals as a sector which is showing strength, and defense as a sector which is showing strength. IT, India Digital are the sectors which are showing weakness. Okay, Hindalco as a company, as a stock, has given a bullish engulf on the weekly time frame. Okay, and on the RSI, it is 66 with a hint of a RSI
negative divergence. Okay, and if you notice, ये जो एक टॉप है 1000 एंड 864 का जो प्रायर सपोर्ट है उसके बीच में ही चल रहा है. So from a daily perspective, it is in a sideways trajectory. From a weekly perspective, the trend has been strong and it continues to show some strength here as well. Now, so as I was telling, RSI being less than 30 is not the only reason why you should look for counter trend trades. There are two points which need to satisfy. There are two conditions. We also need a positive divergence. Let's quickly see if we can find a positive divergence in any of the stocks. What is a positive divergence is something that I will show it to you very soon. Okay. All right. Now, can you see this on TCS? Can you all see this on TCS? All right. So this is a picture of positive divergence. So value picks may we have TCS as our short list. Why? Because the prices are showing lower low. This is low, lower low, lower low. RSI is showing equal lows. I'm seeing a lot of questions with respect to put and call. First and foremost, sir, आप लोग options trading बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. इतना नहीं करना चाहिए. It's a very very risky thing. And इसमें से put खरीदें, call खरीदें, बेचें, नहीं बेचें, हम लोग ये बोल नहीं पाएंगे because as I have told you multiple times, we cannot give call stock recommendations on this channel. If we start giving recommendations as per SEBI mandate, as per the SEBI guidelines, through compliance taken care of, then we will start discussing them. Okay. In the meantime, what we can do is we can look at this. So TCS may we are looking at lower lows and equal lows on RSI. So this is a candidate for a counter trend trade. ये नहीं है कि यहाँ से चालू कर दो लेना. You have to see a price reversal. ठीक है, only then you will consider taking a trade in this. So two conditions are meeting. Now the final condition is confirmation via positive price action. Okay, what could that be? You know, on a daily time frame or on a weekly time frame, अगर एक बेस बना है उसके ऊपर जाता दिख रहा है या बुलिश एंगल्फ बनता है या हैमर बनता है, some sort of a positive signal. So ऐसा कोई नहीं है कि एक ही सिग्नल हो सकता है. It could be any of the signals. So this is an example of a counter trend trade for you. Are we clear with this? I understand, Anilji, that mostly traders are option buyers. And while I would love to, you know, start giving commentary about those trades of yours, but unfortunately my hands are tied, and as per the regulations, हम लोगों को ये legally compliance के द्वारा प्रॉपर करना है. ये शो लंबा चलाना है इसको. ये नहीं कि आज मैंने कोई ट्रेड्स के बारे में बता दिया और कल पता चला सेबी ने हमारे चैनल को बंद कर दिया. ऐसा काम नहीं करना है. इसके लिए मैं कोई भी आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड्स या मैं कोई भी रिकमेंडेशंस की आप कॉल खरीद लीजिए, पुट खरीद लीजिए, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा एंड उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ. हनुमंत सर, टीसीएस क्यों गिर रहा है? आई मीन एंटायर आईटी सेक्टर काफी गिर रहा है काफी दिनों से. एआई काउंटर ट्रेड है, एआई काफी बढ़ रहा है, हमारे पास एआई का लार्ज लर्निंग मॉडल्स नहीं है, उसके कारण गिर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कई सारे ये इस तरह की न्यूज आ रखे हैं. ऑलराइट, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज शोइंग कि भाई यहाँ पर मार्केट में वीकनेस है, स्पेशली विथ टीसीएस. बट टीसीएस क्या ओवरसोल्ड है? डेफिनेटली यस, टीसीएस ओवरसोल्ड है.
बट क्या टीसीएस में कोई डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं ऑन आरएसआई? यस, दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर प्राइस में कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, then it becomes a counter trend or a value pick candidate. Okay, these are the examples that we have discussed. These are the situations that we have discussed from a swing trading perspective. All right, I hope the session was useful. I hope the session as a recap of the entire week was useful, and we've been able to cover a few more interesting topics as well. Finally, before we close the day, let us quickly have a relook at the price action on the major indices. So Nifty is closing with a gap, with a loss of 2.89%, and 450 के पास close हुआ है 337, about 100 points नीचे is our line in the sand. So very close to the support levels, which can possibly be broken. We cannot say for sure, but weakness तो लग रही है. What about Bank Nifty? Now, if Bank Nifty were to be seen, it has in fact, closed near the budget low, and we have closed at the low point of the week. So Bank Nifty में काफी हद तक weakness दिख रही है, which could be the leading indicator for further weakness in Nifty also. All right. Do we have a positive divergence on Bank Nifty? No, we do not. So there is some cause of concern from Bank Nifty perspective. All right, friends. So this is our analysis for the day. Can we wait to invest new money? See, when the markets are fearful, when the markets are falling, okay, it is very difficult to call the bottom. It could just turn out कि भाई मंडे को इतना शार्प गैप अप आ जाए कि हम खरीद ही नहीं पाए उसको. We will be in disbelief. तो जब भी हमारे लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स ऑन हायर टाइम फ्रेम के आसपास मार्केट ट्रेड करते हैं, those are always good opportunities for us to start taking some exposure. अगर हम कैश में बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा मार्केट में डालना is always a good idea. All right, friends, I hope the session was useful for all of us. Please share your comments and feedback as to what more do you want from these sessions, which we conduct from Monday to Friday. Monday to Thursday हम लोग सुबह 8:45 to 9:45 आते हैं, and Friday के दिन we do this specialized show in which we do a weekly roundup, and we try to cater to our swing trader friends. बाकी 4 दिन हम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रखते हैं, एंड फ्राइडेज को जो है हम वीकली स्विंग ट्रेडर्स के लिए फोकस करके रखते हैं, ताकि हर एक को अपना अपना कुछ बुफे में फ्लेवर मिले. सो आई होप एवरीबडी हैव हैड अ गुड वीक, and I wish you all a very good and a happy weekend. I'll see you all tomorrow, not tomorrow, I'll see you all on Monday sharp at 8:45 a.m. Hopefully Monday should be the coming week should be a positive week for all of us. Till then, take care. Bye bye. Namaskar.